Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, some of you are asking me to discuss CPC and bipartite concepts and what is the difference between these two and how they operate. So, I will try to give some insight on both the concepts as per my knowledge. The knowledge may be limited. Some people may agree, some people may disagree. But since you are asking and there is a lot of discussion going on, so I will share my thoughts because my father was central government employee. So I have seen all the pay commissions very closely right from my childhood. And being a bank employee, I have seen many bipartite settlement also during my lifetime. So I can give you a very realistic picture. And the realistic picture, I will only give you the bare facts. Now it is up to you to draw conclusions. I will not conclude anything because both are diverse facts, and over the period of time, the concepts may get relevance or sometimes they become irrelevant. Central Pay Commission means this is a commission wherein central government gets the recommendation for salary structure of its employees. And the tenure is 10 year. That means every 10 years the salary structures undergo a change. So since it is for central government employees, so its applicability is restricted to central government employees, and then based on this, some state government adopt the similar wage structure in their states also. Similarly, there are certain organizations, those are regulatory bodies like RBI, maybe SEBI, maybe some other organization. They may also like to take leave from CPC or they may have their own independent wage structure. There are certain public sectors where salaries can be similar to CPC suggested, and in certain public sector they may have their own structures. So CPC essentially meant for central government employees. And usually some people say in last pay commission this much rise has happened, so this year also this will happen. No, there is no linkage between the percentage hike of last pay commission in the next pay commission. The pay commission hikes are always dependent on what is the basic and DA at the time of constitution of pay commission. And usually the concept is whatever is the DA component that should be merged into pay, and somewhat markup is done to draw new basics. And on new basics, various facilities are given like HRA, CCA, and other things. So if last time, if some basic has become double or 2.5 times, does not mean this time also that will become twice and 2.5 times. No, that will depend what was the DA percentage last time in the seventh pay commission, and what is the percentage of DA before eighth pay commission. So if percentage of DA was very high, it was more than 200%. So more than 100%. So naturally the salaries after merger of DA will be double. But if the DA is less than 100%, as the case is now, so the merger of basic plus DA will not be double. This will be that much percentage of DA will be merged into basic and some markup. Usually the increase is not abnormally high. This I have felt during my childhood also. My father was always used to grudge that government is not giving enough salary, and every time strikes were there, lot of demonstrations were there for better and better things. On the other side, in banking, the concept is settlement. It is not commission because the banking originally started in the private sector in this country.
Only State Bank of India was government-owned bank at the time of, we can say, independence, although name changed thereafter. But all banks at the time of independence were in private sector. Only in 1969 banks were nationalized. But wage revision was banking was happening prior to the ownership goes to the government of India. And that's why there was no question that banks are subjected to central pay commission, because central pay commission is meant for central government employees, and the bank employees are not central government employees, although the ownership may be with the government, because bipartite settlement is a discussion and negotiation between the management and unions. Now, these unions are representing the employees of public sector bank as well as private sector bank. Before nationalization, all these banks were private sector bank. So the bipartite started at the time when the banks were not even nationalized. And that's why the settlement system is IBA versus the unions. And unions are represented, they representing the employees. There are workmen union, which includes clerical and sub-staff and officer associations, they participate. And then they negotiate the things with the IBA. Since now most of the banks where public sectors are there, their wage revision is subject to government approval. So after settlement, the wage revision details goes to the government of India, Ministry of Finance, and Ministry of Finance gives the nod to get it implemented in public sector bank. The private sector banks are free to implement the IBA negotiated things or not implement the IBA negotiated things. Some of the private sector banks are part of negotiation, so they implement the wage structure on the bipartite things. So bipartite settlement is for a particular sector, that is banking, and banking include the public sector, private sector, foreign banks, and so on. So that's why the concepts are different. Some people say why CPC is not applicable. Bank employees are not central government employees. That's why it is not applicable. Only thing they can ask is that our wage structure should be similar to pay commission. That can be asked. But here there are some advantages also in bipartite. Bipartite, the frequency is 5 years, and central pay commission frequency is 10 years. And the bank unions in earlier year fought that they should have their own bipartite settlement system, and there was times when the bank employee salary was better than central government employees, and now there is a time when central government employees salaries is better than bank employees. So this is a phase. Tomorrow if revenue goes on falling, if, government may not be able to give that much of salaries in future. Banking is a business organization, so the wages payment will depend upon the profitability of the sector, because the salary is not paid by the government. Whether it is public sector bank or it is a private sector bank, salary is paid out of income generated by the bank from their own business. It is not paid by the government, and that's why the CPC cannot be made applicable to banking. That is the basic broad reason. But anyhow, demand is going on. Some people want that they should banks should come under CPC, and I doubt it, because they are by nature they are not government employees. So how budget will take care of employees of banks? No, the bank employees are employees of bank. So bank as an organization, whether it is in private sector or in public sector, it will take care of the salary and wages of its employees. And this is the broader difference. So somebody says that salary will be better, this salary will be better. I think these are all hypothetical. We are not aware what is going to happen in 8th pay commission. Some people are calculating 8th pay commission based on 7th pay commission. It is totally hypothetical. The DA level before 7th pay commission was something different.
and the DA level at this junction is totally different. So the merger of DA in basic is going to be totally different this time. So it is an unnecessary discussion. We can go on speaking on these topics for years and hours. It will lead us nowhere. Let the 8th Pay Commission come out with its recommendation and then let it be approved by the government. Then only we will know what is the actual salary of a government employee. And whenever the bipartite settlement will due, and when chartered of demand is given to the IBA, then only we will come to know what will be the future structure of bank employees. So this is all hypothetical, and that's why I'm saying don't spend much of the time on these things. Rather focus on your studies. Whatever field you want to go, kindly prepare for that. This is my view. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आप में से कई लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि सर सीपीसी के ऊपर और बैंक सेटलमेंट के ऊपर, एक बाइपार्टाइट सेटलमेंट के ऊपर आप डिटेल की वीडियो बनाइए। देखो, मेरे जो फादर थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। मैंने सारे पे कमीशन बचपन से देखे हैं और उनकी हालात भी देखे हैं, उनके सैलरी स्ट्रक्चर भी देखे हैं और कैसे हमने जीवन यापन किया है ये भी हमने देखा है। उसके बाद मैं 1982 में बैंकिंग में आ गया और बैंकिंग के भी काफ़ी सेटलमेंट मैंने देखे हैं, अपने सामने देखे हैं, उनको फील किया है। तो मैं आपको दोनों कंसेप्ट्स के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को महसूस किया हुआ है। जो सेंट्रल पे कमीशन है उसका नाम ही है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक कमीशन बनाया जाता है जो उनको क्या सैलरीज दी जाएंगी, क्या सुविधाएं दी जाएंगी, उसके ऊपर वो अपनी सिफारिश देता है और इन सिफारिश को भारत सरकार फिर उसके ऊपर विचार करती है और उसको अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद लागू करती है और इसकी अवधि होती है 10 साल। तो पहली चीज तो बड़ी क्लियर है, इट इज ओनली मेंट फॉर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्योंकि जो आप अलग अलग पूछ रहे हैं ना कि सर इस पे लागू होगा, उस पे लागू होगा, इस पे लागू होगा, पहली चीज आप ये समझ लें, ये सीपीसी का मतलब ही है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कोई चीज मिल गई, अब स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है कि जो सीपीसी की सिफारिशें हैं उसी के अनुरूप वो अपने एम्प्लॉइज को वेस्ट स्ट्रक्चर दे दे या कुछ छोड़ दे। इसी तरह पब्लिक सेक्टर के ऊपर मर्जी है कि उसको हूबहू कॉपी करना है स्ट्रक्चर को या अपना अलग सैलरी स्ट्रक्चर रखना है। इसी तरह आरबीआई के ऊपर है, इसी तरह सेबी के ऊपर है, इसी तरह कई संस्थाएं हैं जो पूरा का पूरा पे कमीशन लागू कर देती हैं और कई पे कमीशन के अलावा भी कुछ दे देती हैं और कुछ उससे कम भी दे देती हैं। तो ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही आपको जानना पड़ेगा। पर जहां तक पे कमीशन का सवाल है वो भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनके लिए होता है। ये पहले हमें समझना है। तो हर ये नहीं कि अगर कोई संस्था सरकारी है तो वो कर्मचारी भी सरकारी हो जाएगा, नहीं। संस्था का ऑनर कोई भी हो सकता है। कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट का वही कहलाएगा जिसको बजट से तनख्वाह मिल रही है, जो भारत सरकार के रोल पे है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि कई लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं 7th पे कमीशन को ध्यान में रख के कि जो 7वां पे कमीशन आया था उसके अंदर बेसिक के अंदर इतने गुना इजाफा हुआ था, इस बार भी इतने गुना इजाफा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पहले पे कमीशन से 7वें पे कमीशन तक देखेंगे तो हर बार जो बेसिक्स फिट हुई हैं वो सिमिलर नहीं है, सेम रेशो में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नई बेसिक बनती है उसके पीछे जो अंडरलाइंग आइडिया होता है वो ये होता है कि जो उस समय का डीए है उसको बेसिक के अंदर मर्ज कर दिया जाता है और मर्ज करके एक नई बेसिक बनाई जाती है जिसके अंदर जो पुराना बेसिक, उस समय का डीए और कुछ ना कुछ इंक्रीज करके एक फार्मूला सेट किया जाता है। उसके अनुसार वो नया बेसिक पे जो पे स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो पिछली बार अगर आप देखेंगे 7th पे कमीशन से पहले डीए 100% से अधिक था, तो इसीलिए वो पे भी डबल हो गई। क्योंकि 100% में जोड़ोगे किसी में तो देखने में लग रहा है वो डबल हो गया, मगर डबल नहीं, वो तो मिल ही रहा था डीए तो एम्प्लॉई को।
इस बार जो डीए है वो 100% से कम है अभी एम्प्लॉइज का, तो इसलिए इस बार जो बेसिक डबल नहीं होगी, इस बार जो फार्मूला आएगा वो ऐसा आएगा कि जो आज का बेसिक है उसमें आज का डीए मर्ज होके और थोड़ा बहुत और ऐड करके वो एक फिटमेंट फार्मूला दे देंगे, उसके हिसाब से वो आएगा। तो जो ये कैलकुलेशन 7th पे कमीशन के हिसाब से हम कर रहे हैं उसका कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि अभी 8th पे कमीशन तो बैठा ही नहीं है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। वो पहले बैठेंगे, फिर उनके पास रेफरेंस होगा, उनके बाद भारत सरकार बताएगी मेरी क्या अफोर्डेबिलिटी है, कितने, क्या मेरी सीमाएं हैं, क्या मेरी इनकम के साधन है, क्या मैं एम्प्लॉय रखना चाहता हूँ, कितने एम्प्लॉय मैं रखना चाहता हूँ, कितनी छटनी करना चाहता हूँ, वो सारी चीजें उसके अंदर विचार होंगी। ठीक है, तो ये इतनी जल्दी सेलिब्रेशन वाली बात नहीं है। तो पे कमीशन में क्या आएगा ये अभी किसी को नहीं पता, इसलिए हम जितना मर्जी उसके अंदर हाइपोथेटिकल एग्जांपल देके खुश हो लें या परेशान हो लें, उससे हमें कुछ हासिल नहीं होना। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं बैंकिंग। बैंकिंग जो है आप ये देखेंगे कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि सरकारी बैंक केवल कौन था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, ठीक है, और बाकी सारे बैंक प्राइवेट सेक्टर में थे, मगर उनका भी बेस रिवीजन होता था, उनका भी बेस स्ट्रक्चर बनता था, तो क्योंकि सरकार के वो थे ही नहीं तो इसलिए बैंकिंग में एक सिस्टम बना कि वो जो मैनेजमेंट है वो यूनियन से बातचीत करेगी और यूनियन से बातचीत करके क्या तनख्वाहें देनी है इसका फैसला करेंगे। मतलब अपनी मनमानी से नहीं दे सकते और यूनियन के साथ बात करनी होगी। तो उसमें जो मैनेजमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है आईबीए, और जो एम्प्लॉइज हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं यूनियंस। तो वर्कमैन यूनियन होती है जो क्लर्क और सबॉर्डिनेट स्टाफ को रिप्रेजेंट करती है, और ऑफिसर्स एसोसिएशन होती है जो ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो यूनियंस हैं, जो ये एसोसिएशंस हैं, आईबीए मिल के आपस में नेगोशिएशन करके एक सेटलमेंट पे पहुंचता है जिसको बाइपैट्राइट सेटलमेंट कहा जाता है। तो ये जब वो सरकारी नहीं थे बैंक तब भी बाइपैट्राइट सेटलमेंट था, और जब ओनरशिप सरकारी हो गई तब भी वो प्रथा चली आ रही है। हालांकि बाइपैट्राइट सेटलमेंट के अंदर सरकारी बैंक भी शामिल होते हैं, प्राइवेट बैंक भी शामिल होते हैं और फॉरेन बैंक भी शामिल होते हैं। तो जो बैंक बाइपैट्राइट का हिस्सा बनना चाहता है, आईबीए की अप्रूव बातों को मानना चाहता है, वो बाइपैट्राइट के अंदर शामिल होते हैं। इसलिए इसका स्वरूप डिफरेंट है। ये हर 5 साल बाद होता है और 5 साल की नेगोशिएशन के हिसाब होता है, क्योंकि जो बैंक है वो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी अलग से प्रॉफिट मेकिंग, वहां पर सैलरी भारत सरकार से नहीं आ रही, ना किसी राज्य सरकार से आ रही है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको जो सैलरी दी जा रही है, जो सुविधाएं दी जा रही है, वो उनकी आमदनी से दी जा रही है। तो क्या अफोर्डेबिलिटी है उस बैंक की, उसके ऊपर निश्चित करेगा कि कितनी तनख्वाह किसको मिलेगी। तो इसलिए जो सेटलमेंट है वो अलग कंसेप्ट है, और जो पे कमीशन है वो अलग कंसेप्ट है। लोग कहते हैं पे कमीशन लागू हो जाना चाहिए, ये आपकी इच्छा हो सकती है पर कंसेप्ट ही डिफरेंट है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ऐसे भी वक्त हुए हैं जब बैंकों की तनख्वाह भारत सरकार से अच्छी थी, लोग बैंकों में आना पसंद करते थे क्योंकि यहाँ तनख्वाहें ज़्यादा थी, क्योंकि सेटलमेंट के अकॉर्डिंग थी। और सरकार की क्योंकि अफोर्डेबिलिटी लिमिटेड होती है तो उन सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बहुत धीरे धीरे बढ़ती थी। ठीक है, तो एक जमाना होता था लोग कहता था एक कछुए की चाल से बढ़ती है। तो ये क्या होता है, फेजेस होते हैं। आज की हो सकता है कुछ सेटलमेंट, कुछ पे कमीशन ऐसे आए जिसमें उन्होंने अच्छा इंक्रीज दे दिया, कुछ सेटलमेंट उतने भारी भरकम नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। तो ये एक वक्त होता है। तो कौन सा सिस्टम अच्छा है, कौन सा सिस्टम बुरा है, ये वक्त की कसौटी पे ही नापा जाता है। तो इसको हम कहेंगे इसको वो बदल देंगे, क्योंकि भारत सरकार तो अपना वजन उठाए यही बहुत है। वो जो चीज़ें उनके नहीं है उनका वजन वो क्यों उठाएगी। भारत सरकार तो अपने कर्मचारियों का ही वजन उठाएगी ना। जो बैंक्स हैं वो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, उसके वो मालिक हो सकते हैं, मगर वो सरकार उसका खर्चा भी वहन करेगी ऐसा नहीं। उन्होंने पूंजी दी है, खर्चा और पूंजी में अंतर होता है, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता है।
ठीक है, तो इसमें पूंजी लगी हुई है सरकार की, पूंजी जो लगी है उसके अंदर जो प्रॉफिट आते हैं वो डिविडेंड सरकार को जाता है हर वर्ष। मगर जो बैंक के कर्मचारी हैं उनको कितनी तनख्वाह देनी है, उनको क्या सुविधाएं देनी है, ये बैंक की मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी। वो अपने बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेगी, जैसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने बिजनेस मॉडल से डिसाइड करती हैं। तो ये हमें कंसेप्ट को समझना है और किस सेक्टर में हमें जाना है, ये हमें ध्यान से उसका चुनाव करना है। सरकारी नौकरी अच्छी है या बैंक की नौकरी अच्छी है या इंश्योरेंस की नौकरी अच्छी है या आरबीआई की नौकरी अच्छी है, ये तो आपको डिसाइड करना है। कंसेप्ट आपके अनुसार नहीं बदलेंगे, ये बात को हमें समझना है। कंसेप्ट कंसेप्ट ही रहेंगे। ठीक है, मेरी जितनी नॉलेज है, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, उसके अनुसार मैंने अपनी बातें रखी हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कि वो चाहें इसमें और ऐड करना, वो ऐड भी कर सकते हैं, मगर मेरे को जितना पता था वो मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी मैं आज की डेट के अंदर सबको यही सलाह दूंगा कि ये जो हाइपोथेटिकल हम फिगर लेके डिस्कशन कर रहे हैं, इससे बचे। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, क्या सैलरी होगी किसी को नहीं पता है, जब होगी तब देखा जाएगा। अभी जहां आपको नौकरी मिल रही है, जहां वैकेंसीज हैं, जहां आप नौकरी पा सकते हैं, उसका प्रयास करें तो आपके लिए हितकारी होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।